Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all to learn Chinese language with Chinese language made easy. I'm Muhammad Shahid and today we will discuss a sentence, and the sentence is that my cell phone has no charge, or you can say that my cell phone is out of power. Okay, आज जो हम सेंटेंस जो जुमला जिसकी वजाहत करने जा रहे हैं वो जुमला है कि मेरे मोबाइल फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो गया है या उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। सो हम ये कैसे कहेंगे चाइनीज़ लैंग्वेज में, और फिर उसकी हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स प्रोसीड एंड गेट टू नो अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू से दिस सेंटेंस इन चाइनीज़ लैंग्वेज। सो हियर इज़ द सेंटेंस, just pay attention towards these characters and I'm going to say it one by one. 我的手机没电了，我的手机没电了。我的 means my or mine, 手机 means mobile phone or cell phone. May don't have. 电 means electricity or power. So it is indicating that the mobile phone or cell phone does not have power. Okay, le is a Chinese language particle and it has many uses. One of its use over here is that it is indicating the state change. By the state change I mean that the mobile phone or the cell phone was previously charged, it was having charge, it was not empty, it was not out of power, but right now it is dead, it is out of charge or out of power. So that is why it is indicating that state change, and we are using this le over here, okay, for that purpose. ये जुमले की मैंने वजाहत कर दी कि मेरे सेल फ़ोन में या मेरे मोबाइल फ़ोन में जो है चार्ज ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो 我的 मेरे 手机 मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन में नहीं है। दियन कहते हैं बिजली को, लेकिन यहाँ पर जब शौजी के साथ ये में दियन आ गया तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये चार्ज की तरफ इशारा कर रहा है कि बैटरी की जो पावर है वो ख़त्म हो चुकी है, जो कि हमें बिजली से चार्ज जो है उसका मिलता है और उससे फुल होती है। सो अभी मोबाइल में इसका अगर लिटरल मीनिंग लिया जाए, लफ्ज़ी माना अगर इसका लिया जाए तो इसका मतलब होगा कि मेरे मोबाइल फ़ोन में बिजली ख़त्म हो गई है। तो बिजली ख़त्म कैसी हुई है, हम चार्ज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इस वजह से ये दियन इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ल की मैंने इंग्लिश में वजाहत कर दी कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है चाइनीज़ ज़बान में कि इसके मुख्तलिफ़ इस्तेमाल हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं, लेकिन एक इसका इस्तेमाल ये है कि हालत बदलने को ये ज़ाहिर करता है, ठीक है। किसी कोई वाक़या हुआ है, पहले किसी चीज़ की हालत कैसी थी अब कैसी है, तो वो उसको ज़ाहिर करता है। तो पहले मोबाइल फ़ोन में चार्ज मौजूद था लेकिन अभी नहीं है, तो उस हालत के बदलने को ये ज़ाहिर कर रहा है कि अभी उसमें चार्ज ख़त्म हो चुका है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस सेंटेंस. Next to it is I have discussed another sentence and I have just added one single character to the whole sentence which I discussed previously, and that was my cell phone is out of power. But right here I added this kwai. Kwai means fast, rapid, quick. Okay, so these are the meanings of this word, and right here I just added it after 手机. So what does it mean? The sentence has changed completely. Right now you can see that 我的手机快没电了，我的手机快没电了，我的手机快没电了。My cell phone is running out of power. Okay, running, it has some charge left, but it is running out of power. Okay, it is not dead completely, but very fast it will be dead. Okay, soon it will be dead. So 我的手机快没电了 का जो मतलब मैंने समझाया यहाँ पर ये लफ्ज़ मैंने ऐड कर दिया, बाकी मैंने कुछ इसमें एडिशन नहीं की है, कोई चेंजेस नहीं लाया, सिर्फ शौची यानी मोबाइल फ़ोन के बाद मैंने ख्वाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया।
ख्वाए का मतलब है तेज़ी के साथ, जल्दी, यानी मेरे मोबाइल फ़ोन में चार्ज अभी बाकी है लेकिन इतना होगा कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सेंटेंस उसकी तरफ इशारा कर रहा है। बाकी मैंने इसमें कोई एडिशन नहीं की है। एंड ये आपके सामने इंग्लिश का सेंटेंस है, जुमला है। ये कह रहा है कि मेरे मोबाइल फ़ोन में जल्दी चार्ज ख़त्म होने का अंदेशा है, ख़तरा है, या ये तवक्को की जा सकती है कि मेरे मोबाइल फ़ोन का चार्ज जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेंटेंस. आई हैव जस्ट एक्सप्लेन दिस. ऑल्सो आई हैव explain these words one by one and you will see it right now. The first word was water, mind. In Urdu we can say that मेरा, या जैसे कि हमने इस सेंटेंस में जो जुमला मैंने बयान किया उसमें कहा मेरे मोबाइल फ़ोन. ओके, सो मेरे मोबाइल फ़ोन. शौजी जो आगे आ रहा है, सो ये शौची cell phone, mobile phone. Okay, and next to it is may, don't have, nahi hai, don't have, may. Okay, this one is din, electricity, power, बिजली को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल कैसे किया मैंने उर्दू में उसकी वजाहत कर दी आपको कि हमने चार्ज के ख़त्म होने की तरफ इशारा किया है इसमें. और ख्वाए का मतलब फास्ट, रैपिड, क्विक, स्विफ्ट. तो ये उसके माने हैं तेज़ी के साथ, जल्दी के साथ मोबाइल फ़ोन में चार्ज ख़त्म होने जा रहा है. सो these are all the words that we have used in the sentence that I have explained in front of you. जो जुमले की वजाहत की मैंने आपके सामने, ये लफ्ज़ उसमें हमने इस्तेमाल किया है. अब आगे अगर हम चलते हैं तो we will practice this sentence and we will get to know that how we are going to write each and every stroke in a proper order. Okay, so that is how we are going to learn it, by speaking it and by writing it. So we are going to memorize it quite easily. So let's just start our writing practice right now. How to write my cell phone is out of power in Chinese characters. मेरे मोबाइल फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो चुका है, ये हम चाइनीज़ कैरेक्टर्स में कैसे लिखेंगे. This is our writing practice. Okay, मेरे मोबाइल फ़ोन में चार्ज ख़त्म हो चुका है, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ.我的手机没电了. My cell phone is out of power. It's dead. How to write my cell phone is running out of power in Chinese characters. मेरा मोबाइल फ़ोन और मेरे मोबाइल में चार्ज जल्दी ख़त्म होने वाला है, ये हम चाइनीज़ कैरेक्टर्स में कैसे लिखेंगे. This sentence is different from the previous one. If you can see, 我的手机快没电了. 我的手机快没电了. My cell phone is running out of power. मेरे मोबाइल फ़ोन में चार्ज ख़त्म होने. So this is all for today. I hope that you would have enjoyed learning Chinese with Chinese language made easy. If you like our video lectures, do not forget to subscribe to our channel, Chinese language made easy, if you're new on the channel, and we will try our best to bring interesting information regarding Chinese language. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आप नए हैं चैनल पर, हम मज़ीद मुफीद मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. 再见.